Assalamu alaikum बच्चों. Today the topic that we'll be doing is integration by parts. सबसे पहले इसमें कुछ डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल हमने देखा था उसको स्टडी करते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बिकॉज दैट इज वेयर द एंटायर प्रोसेस डिराइव्स फ्रॉम. अगर u into v की डिफरेंशिएशन करनी होती है तो क्या आती है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u into v प्रोवाइडेड दैट u and v आर टू फंक्शंस ऑफ x? क्या आती है? u or v, if they are multiplying and they are two functions of x, what is their differentiation या what is their derivative? वही प्रोडक्ट रूल क्या लगता है? Very good, very good. So u multiplies by the derivative of v plus v multiplies by the derivative of u. Now can I say that if I integrate this entire thing, I'll again get u into v. The formula is provided, so don't worry about it. I'm just explaining how we got there. सही है ना? So if I say that I integrate this entire thing, will I get u into v? Yes, I will. अच्छा, इसमें जरा और से देखो, I have two things, u and derivative of v plus v into derivative of u. Can I just integrate them separately? Can I do that? Yes. Again, this integral is being added over here. If I take it on the other side, can I just subtract it? Yes, I can. तो अब मेरे पास बन गया कि if I have two functions which need to be integrated and they are being multiplied, I am calling one of them as u and the other one as v dash. Be very clear about it. एक को u कह रहा हूं और दूसरे को v dash कह रहा हूं. So the integral can be found by using this integration by parts, where u multiplies by v, subtract the integral of the product of v and u dash. Is this clear? Remember, अभी इसमें इंटीग्रेट करना है. अगर जब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, there is a portion that still needs to be integrated, so don't forget that. इसी चीज को सिर्फ लिखने का एक और तरीका मैं बता रहा हूँ. So what if हुआ क्या? गौर से देखो. If I'm calling it v dash and this is v, how do I get v from v dash? कैसे आएगा? v dash से v कैसे आएगा? इंटीग्रेट करके. नाउ बी वेरी क्लियर अबाउट दिस ऑपरेशन. ठीक है, मेरे पास एक अगर मैं u कह दूं और एक को v कह दूं, अगर कह दूं, बच्चे कुछ कहते हैं इस तरह से भी हम करते हैं सर, इंटर वगैरह में और डिफरेंट सिलेबस में इस तरह से भी लिखा है. सो इफ यू कॉल वन फंक्शन u and the other function v, so basically you are taking u and multiplying it by the integral of v, minus you are taking u dash and again multiplying it by the integral of v. Is this clear or not? आप टेक्निकली काम कर क्या रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में? आपने एक फंक्शन u बना लिया एंड अनदर फंक्शन इज v और v dash. नाउ इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस यू आर ओनली यूजिंग u एज u और इट्स डेरिवेटिव. आप u को खुद यूज कर रहे हैं या उसका डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं. बट जो दूसरा फंक्शन है इसको आप खुद यूज ही नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इसके इंटीग्रल्स यूज कर रहे हैं. ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? दिस इज व्हाट नीड्स टू बी क्लियर. फॉर्मूला प्रोवाइड होता है. थोड़ा सा सोचना क्या है कि u जो है वो खुद एज अ फंक्शन यूज हो रहा है या उसका डेरिवेटिव यूज हो रहा है. जो भी दूसरा फंक्शन है वो खुद तो यूज ही नहीं हो रहा है, सिर्फ उसके इंटीग्रल्स यूज हो रहे हैं. तो हम यूज को बनाते हैं जिसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो. तो द सीक्वेंस ऑफ u इज यूज्ड इन दिस आइलेट. u सेलेक्ट करना जरूरी होता है. And when you select u, you follow the sequence which you call iLate. लिख लो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले लेट था, 2022 सिलेबस से पहले अगर जाओगे तो it was late. Now it is iLate. बोलो, बता रहा हूँ. Explain. iLate is I is inverse trigonometric, L is log, A is algebra, T is trigonometry, and E is exponential. टेक्निकली u ऐसे को बनाते हैं जिसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो, ताकि दूसरा वाला v बने तो इजीली इंटीग्रेबल हो, क्योंकि v का इंटीग्रेट ही यूज हो रहा है. यस, दिस इज द प्रेफरेंस ऑफ सेलेक्टिंग u.
इफ आई हैव मल्टीपल, देखो दो फंक्शन है उनकी प्रोडक्ट है, राइट? तो उनमें से एक फंक्शन को यू सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो दिस इज द प्रेफरेंस दैट आई विल फॉलो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक 22 सिलेबस के बाद इनवर्स इज इंपॉर्टेंट नाउ, 20 के बाद सॉरी। एल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, tan इनवर्स है ना हमारे सिलेबस में A2 में। तो L is logarithmic and A is algebraic, T is trigonometric and E is exponential. E to the power of x, ये एक फंक्शन है। किसको U लेना चाहिए था, पहले ये बात देखो जरा। Why? तो A is algebra, A is algebra, yes. X will be taken as U and sine 2x will be taken as V dash. Amna, you have missed out on something. I'll be uploading the recording, so you can see मैं record कर रहा हूँ. Okay, sir. Thank you. Okay, understand this thing that U and V dash हमारे पास integration by parts में हम use करता है. I'm repeating V dash and U. Okay, we call one of the functions U and the other one as V dash, and we use it in integration by parts. इस तरीके से हम उसको इंटीग्रेट करते हैं. रिमेंबर, ये हम सिर्फ ब्रेक करते हैं बाय पार्ट्स, टुकड़ों में. अभी इंटीग्रेट होना है. So if I give you this function x sin 2x, यहाँ दो functions है, multiply हो रहा है. One is x and the other one is sin 2x. We, while selecting u, we keep in mind this preference. क्यों? क्योंकि u का इंटीग्रल कहीं यूज नहीं कर रहे होते, v का इंटीग्रल यूज करते हैं. तो u हम easier order of integration में लेकर जाते हैं. Inverse trigonometric, logarithmic, algebraic, trigonometric और exponential. So I late को हम follow करते हैं while selecting u. If I give you x sin 2x, अब u किसको select करेंगे? x को. And v dash is your sin 2x. Now use, before going on to use integration by parts, I urge everyone to make a proper data so that you don't end up making an error. अगर u x है, मुझे u खुद use करना है और उसका derivative use करना है. So if u is x, the derivative of u is 1. If v dash is sin 2x, v is negative cos 2x upon 2. इसका इंटीग्रल निकालते हैं. Be very clear about it. Is this clear? And then use the integration by part. Let me know what do you get. पहले लिख लो proper तरीके से, जो भी हमने सीखा है. बोल. It is b dash. We are calling it b dash, and we need v. I asked you initially, if you have a b dash and you need a v, what do? You said, sir, we'll integrate, and that is what I did. If this is, I'm calling this v dash, how do I get v? By integrating v dash, right? Yeah. V dash is already differential. V dash, derivative of v. हमने बनाया किससे? इससे बनाया ना, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से. हम कह रहे थे एक को u ही कहते हैं, एक को कहते ही v dash है. If you are calling one of them v, you can, but then you must make sure you will use the integral of v. तो आप integral of v निकाल के plug in करेंगे. इसलिए I have highlighted the one that is provided in your syllabus and the formula that you use. ये भी कर सकते हो, एक को u एक को v दे लो, बट ख्याल रखना फिर v का इंटीग्रल यूज हो रहा होगा, नॉट v itself. सही है बच्चों? Just by doing this, अभी आपकी remember the integration is not complete. This is just the first part where you are breaking it down into two things. You are saying u multiplied by the integral of v dash or integral of the other function, which is technically v, minus, and then u ka derivative is 1 and v is negative cos 2x upon 2. Remember, this is the part that you still need to integrate. ये भी आपको integrate करना है. And this is what you get.
Never forget the arbitrary constant if you have indefinite integrals. Plus C लगाना मत भूला करो. You can put that plus C after the entire process of integration. यही आया सबका? Is this clear? Okay, do this one for me, please. Integral of x square e to the power negative x. U, what will be your u in this particular scenario? X square is your u. And e to the power negative x is your v dash. This is the first step that you'll take. U multiplied by the integral. I urge everyone to make this data whenever you go on continuing with integration by parts. एक को u लो, एक को u dash. Obviously, इसका derivative you find on your own. The other function is what you call v dash. So you find v by integrating the entire function. Is this clear? E to the power negative a divided by minus 1. So instead of dividing it by minus 1, I can say minus e to the power minus x. It's the same thing. So here the task is not yet done. How do I integrate this now? इसको कैसे integrate करूँगा? Anyone? How do I integrate this thing now? We'll put by parts again. Again, two functions are multiplying and you need to integrate. So you'll use integration by parts again. Just for this particular part. If you want to do it, you can do it separately and then plug it in this entire thing. Another way is to do this is to simplify. Make this plus 2 and take 2 common because it's a constant. And then you're left with only this. And this is what you can integrate separately and plug it in this. Is this clear, bachon? Again, what will be your u in this one? X. And v dash will be e to the power negative x. Clear? Again, remember, you still need to integrate this part. This is something that you still need to integrate. This is what you should get. And when most of these questions, the question urges you to take e to the power minus x common. Not for the integration purposes, but for further simplification. The question urges you कि e power minus x का आप common ले लें और फिर उसका end में plus c लगा सकते हैं.
इंटीग्रेशन में तो सेम आएगा एज इट इज, डिवाइडेड बाय माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिक, बाहर का माइनस लगा हुआ है तो उसकी वजह से। एंड रिमेंबर ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग इनसाइड द 2, so whatever you get you multiply the entire thing by 2, be very careful about that। अगर आपने 2 बाहर लिया, अगर नहीं लिया अंदर रख लिया है तो फिर उसके बारे में भी आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। लिख के करो स्टेप बाय स्टेप, यू नीड कंपोजर टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट बट मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेसेस आर इन्वॉल्वड, फिर उसके बाद परेशानी हो जाती है बच्चों को। सवाल आसान है, डोंट वरी अबाउट दैट। Is this clear बच्चों? Anyone has any questions or if anyone else is getting any different answer, please let me know. इधर क्लियर है? How do you integrate ln x? ln x को भी आप इसी तरह इंटीग्रेट करते हैं सर। देरा ln x में कौन सी प्रोडक्ट है? ln x तो एक ही फंक्शन है। नहीं, ln x इज वन सिंगल फंक्शन, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की क्या जरूरत है? बिकॉज यू डोंट नो द इंटीग्रल ऑफ ln x, आपको नहीं पता इंटीग्रल ऑफ ln x, तो आप कहते हैं ln x मल्टीप्लाइड बाय 1, द अदर फंक्शन यू टेक इज 1। u किसको बनाएंगे? ln x, ln is nothing, ln x is one single function, ln x is your u and 1 is your b dash। x आ जाएगा, b dash तो 1 है ना। You tell me what is the derivative of ln x? We have done differentiation. What is the derivative of ln x? 1 upon x. Simplify will give you 1. Remember, this 1 will still have to be integrated, which will eventually be x. सही ना, इसको इंटीग्रेट होना है। This sign tells you whatever is inside needs to be integrated. Is this clear? I would want you people to try it on your own. X tan inverse of x, because tan inverse is something that is new, relatively new to your syllabus, not new anymore. For the past 3 years, it has been included in your syllabus. What will be u? Tan inverse of x is u. Very good. Yes, class. X square upon 2. I'm waiting, class. I want everyone to attempt this one on your own. Any questions up till now? Please let me know. This is the first step. I believe everyone would have done this one. Let me know when you're done with the first step. And if you can go on doing the next one, carry on. अगर नहीं समझ आए, if you have any questions, then please feel free.
Done? Okay, now how do you integrate this thing? कैसे करोगे इसको by parts? Okay, we have to. This is what you need to integrate, right? Right, this is what is causing trouble. अब इसमें by parts लगाना is not the right option. Yes, class. Anyone has any suggestions of how should we go about integrating this? सब्स्टिट्यूशन से Sorry, सब्स्टिट्यूशन से substitution से बहुत lengthy हो जाएगा. Doable है. Again, I told you in A levels, the question always provides us with substitution. If it's not provided, तो हम खुद नहीं करते, गड़बड़ हो जाती. कर सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी लेकिन. Okay, what can you tell me about this fraction? Anything that you. What can you tell me about this fractions? Fraction के बारे में आप मुझे क्या बात बता सकते हैं? Using the previous topics, the knowledge of the previous topics that you have studied. कुछ भी बता सकते हो मुझे इस फ्रैक्शन के बारे में? बोला हाँ सर, ये तो बात बता सकता हूँ. पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल तो उसके तोड़ते हैं ना. अब इसके क्या पार्शियल बनेंगे? इसका तो डिनोमिनेटर है ही नहीं. डिनोमिनेटर में if we have multiple factors, that is when we break it into partial fractions. But what about this one? क्वोशंट रूल क्यों लगेगा इसमें? वजह बताओ. रूल क्या लगेगा क्वोशंट का? इस चीज का क्वोशंट रूल. This is an improper fraction. The degree of the numerator is equal to the degree of the denominator. Hence, it's an improper fraction. ये improper fraction है. आप इसकी long division कर सकते हैं? बिल्कुल करें. long division करके मुझे remainder और quotient बताएं. Your quotient and your remainder. I told you all the previous topics will eventually be integrated in the later topics. Long division करके बताओ क्या आ रहा है? ये रिमाइंडर आया और ये क्वोशंट आया. एनीवन? One will be your quotient and -1 will be your remainder. सही है. Can I write it like this? Quotient plus remainder upon divisor, right? Right? There is another trick to it. I'll explain that trick later on. Skip out trick, but abhi for the time being, just go with this one. Now you can integrate them separately. इस one का integral क्या होगा? X. और इसका integral क्या होगा? Tan inverse of x. 1 upon 1 plus x square या 1 upon x square plus 1 is tan inverse of x. Be familiar with this. 2020 के बाद के पास reverse करो, उसमें सब चीजें आएंगी. And remember, this entire thing is multiplying by half. This was just the integral of this thing. So what is your complete integral? X squared tan inverse of x upon 2 minus x upon 2 या half x plus tan inverse of x upon 2 plus c.
Yes, बच्चों, done. Never forget the constant that you put in the very end plus c. Clear है? अच्छा, एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हाँ उसकी ट्रिक बता रहा हूँ, देखो जरा. If you have such a thing, what is it that is missing? आप कहते हैं नीचे x square plus 1 है, आपने कहा सर अगर मैं plus 1 और minus 1 लगा दूं, have I broken any mathematical rule? अगर मैं x square plus 1 अलग लिख दूं और minus 1 के साथ अलग लिख दूं, can I do this? ये चीज मेरे पास 1 हो जाएगी and this is what I will get. ये ट्रिक है, इसको लिख लो, लिखोगे तो याद रहेगी वरना फिर भूल जाओगे बेटे. So write it down, this is just a trick. And when do we use this trick? Be very clear. If there is just a constant value which is in the denominator and missing from the numerator. If there is a constant value that is missing from the numerator and exists in the denominator, that is specifically when we can use this trick. Not always. हर सवाल में मुंह उठाकर नहीं करेंगे इसको. Okay, class. I'm specifically concerned about the third part in this question. 1 and 2 हम differentiation में कर चुके हैं. So I want everyone to please pay very close attention to part 3. Use integration by parts to find the exact area of the shading. Well, you need to find the x coordinate of A. How do we find the x coordinate of A? Anyone? Denominator में हो, numerator में missing हो, फिर कुछ नहीं कर सकते. करके भी कोई फायदा नहीं. Denominator को अलग अलग नहीं लिख सकते ना. Numerators can be written separately with the same denominator, but we cannot do that with the denominator, right? And पहले A का coordinate निकाल लो जल्दी से, शाबाश. How do you find the coordinate of A? Y की जगह 0 डालोगे, x square 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, x becomes e to the power 0, though, so the x coordinate of A is 1, right? The x coordinate of A is 1. All of this has already been covered in the previous topics. Now we are doing integration by parts to find the exact area of the shaded region. How do we find the area of the shaded region? We integrate the entire y, which is ln x upon x square, and what are the upper and the lower limits? What is the upper limit? You can see it in the figure. 9. Lower limit is not 0. X की value ही limits देंगे ना. You need to find the area between curve and the x-axis. E and 1. A is 1. सही है. So E is your upper limit and 1 is your y को 0 रखो equation में. Is this clear, बच्चों? Yes, sir. Now, what is your view? Remember, the question is asking us the exact area. So we need to tell the exact area rather than some values in decimals. Okay, class. Now, what is your view in this particular scenario? Use ILATE. ILATE देखो, x तो पहले it's dividing तो उसको ऊपर लेकर आओ.
Yes, ln x upon x square is what we integrate. That this is how we'll find the area, right? Yes. Area लिख देता हूँ so that people don't get confused. Ln x is u and v dash will be x to the power minus 2. So what will be your v? ये लो दोबारा दे दिया, ये लो सामने ले लो बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला u v dash, it's always provided in mf 19, is equals to u v minus integral of v u dash. I'm waiting for your answers, class. Remember, these are definite integrals. Yes. Plus 1 Sorry, Taha. minus 2 upon a plus Good. Very good. Remember, these are definite integrals. Use proper notations. Once you have integrated even this part, this u into v also has to be used for the limits. So you have to use proper notations.